Welcome to my channel. So in the today's lecture we will be studying about the biodiversity conservation in drylands. Okay, this is very important topic because biodiversity conservation in a dryland area is very important for farming and also other जो practices है for that. Okay, so we can see an overview. So we will be studying what is the biodiversity and how it is important for the drylands and how and why we have to conserve the biodiversity. So आज का टॉपिक है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसको किस तरह से ड्राईलैंड एरिया जो रहते हैं वहाँ हम सुरक्षित करके या उनका संरक्षण करके रख सकते हैं, बोला जाए अगर हिंदी में तो। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बेसिकली ड्राईलैंड एरिया यानी शुष्क जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे जो ड्राईलैंड एरिया रहते हैं वहाँ साल भर बारिश नहीं होती, केवल जो रेनफेड मतलब रेनी सीजन रहता है यानी उस दौरान ही उनको रेनफेल अवेलेबल हो पाता है, जिससे सॉइल में जो मॉइस्चर है उनकी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। इसलिए मॉइस्चर कंजर्वेशन जो प्रैक्टिसेस हैं और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है वो करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि साल भर हम खेती कर सकें उस स्थान पे। ठीक है, तो मैंने हिंदी में बता दिया। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे लगेगा मैं वहाँ पे हिंदी में आप लोगों को ये चीज़ डील कर दूँगी। सो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है अब ये देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ द ओरिजिन ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ क्रॉप्स एंड द वेराइटी विद इन them. Okay, this is nothing but the origin of all species of crop and their diversities within the crop species is what biodiversity means. बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर क्रॉप है उन्हीं के विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज़ रहती है और उनमें जो विविधताएं पाई जाती है, ये सिंपल सा एक बायोडाइवर्सिटी होता है। यानी किसी पर्टिकुलर क्रॉप और उससे रिलेटेड जो उनके सेम स्पीसीज़ है उनमें जो चेंजेस और जो वेरिएशन पाए जाते हैं ये बायोडाइवर्सिटी होता है। सो द मेंटेनेंस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड द बेनिफिट्स दिस प्रोवाइड टू ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड्स। सो हम जब इस तरह से बायोडाइवर्सिटी का जब कंजर्वेशन करते हैं या जब हम मेंटेनेंस करते हैं बायोडाइवर्सिटी का, तो जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन है किसका, फूड का एंड जो भी अदर खेती से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स रहते हैं जो हमको खेती से प्राप्त होते हैं, ऐसे जो सामान रहते हैं उनका भी क्या होता है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता है या टिकाऊ उत्पादन होता है। और ये बेनिफिट केवल किसानों को ही नहीं अदर जो ह्यूमन्स हैं उनको भी मिलता है, जैसे कि लाइक फूड सिक्योरिटी। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशन मिलता है। हम अगर सस्टेनेबल प्रोडक्शन होगा तो न्यूट्रिशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल होगा, लाइक फ्रूट मिल्क एंड अदर जो भी चीज़ें हैं एंड अदर लाइवलीहुड्स भी। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या मेंटेनेंस करना एसेंशियल हो जाता है और ज़रूरी है। वी हैव टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। बेसिकली पॉइंट यही है कि क्रॉप के लिए एंड जो नेचुरल बोल सकते हैं हम, ठीक है, सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि पॉल्यूशन भी नहीं होगा और फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगा। तो ये है। नाउ कमिंग टू द बायोडाइवर्सिटी, व्हेनेवर टू द बायोडाइवर्सिटी इज confined, it for the almost all the people it is only concerned to genetic material. So let us see what is biodiversity in terms of generic. Okay, biodiversity in plant genetic material is one of the most basic resources that needed for the survival. अब हम जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये वेरिएशन जो है अगर हम बात कर रहे हैं एक क्रॉप के डिफरेंट स्पीसीज में जो वेरिएशन होता है ये आता है बेसिकली जेनेटिक लेवल पे। तो यहाँ पे जेनेटिक डेफिनेशन जो है, जेनेरिक लेवल पे जो डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी का वो भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो इट्स अ सोर्स ऑफ रिच
variety of food, fodder, medicines, manure and other raw material used in providing man's basic needs. So it has also been the source of breeding material for new crop varieties all over the world. क्योंकि हमको पता है जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन पाया जा रहा है, तो डिफरेंट जो वेरिएशन है उनका आपस में क्रॉस कराकर न्यू तरह की जो वेराइटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है, यानी ब्रीडिंग वर्क में भी ये वेरिएशन हेल्पफुल होते हैं. सो इन द प्लांट जेनेटिक मटेरियल बायोडाइवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स, is one of the basic resources, like no doubt in that, but at the same time it is a resource of variety, food, fodder or medicine, manure or other जो भी materials हैं that is used in providing the man's basic need. It has also been the source of breeding material, जो मैंने अभी आपको बताया. Now हम देख लेते हैं, 1 minute. Now we can see if there was no biodiversity, the new varieties they wouldn't have been developed. अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो वेरिएशन नहीं होंगे, तो अब क्रॉस किसका कराएंगे. मतलब वेरिएशन जो है बहुत हेल्पफुल होता है जब हमको न्यू वेराइटीज़ डेवलप करना रहता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी का मेंटेनेंस. बिकॉज डाइवर्सिटी ऑफ द कैरेक्टर इज़ अवेलेबल अमॉन्ग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज, सो इट it an important breeding material for the breeder to develop the new varieties. Okay, so now biodiversity not only means diverse the species but also the relationships among the plant, animal and microorganism, soil and water, which give rise to ecological and cultural diversity. So now biodiversity is a breeding material, no doubt, क्योंकि हेल्पफुल है ब्रीडिंग में, न्यू वेरिएशन क्रिएट करने में, न्यू वेराइटीज़ क्रिएट करने में. और साथ ही साथ ये केवल वेरिएशन नहीं होता, जो प्लांट है, एनिमल हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका आपसी रिलेशनशिप या संबंध होता है. ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है, ब्रीडिंग मटेरियल भी है. बट एट द सेम टाइम इट इज़ द रिलेशनशिप अमॉन्ग द plant, animal and microorganism and microclimate that is surrounding the crop. ठीक, तो ये है यहाँ पर. नाउ जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है is the not mere breeding material but a product of interaction between the inherited traits and the environment. ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये एक ब्रीडिंग मटेरियल की तरह तो नहीं है, बट क्या है, ये किसके बीच का इंटरेक्शन है, या मतलब जब इनहेरिटेड ट्रेट हैं, जो कि मतलब इनहेरिटेड ट्रेट मतलब जो मतलब हेरिटेबल वो होते हैं, जो एक जो पीढ़ी है उससे दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, तो ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं और जो इन्वायरमेंट है, इनका जो आपस में जो भी कुछ इंटरेक्शन होता है, आपसी जो संबंध होता है, ठीक है, इसका क्या है, एक प्रोडक्ट होता है जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो. सो एज अ रिजल्ट ऑफ को एवोल्यूशन, सो व्हेन यू come to the genetic diversity, it is not only the breeding material. Okay, it is a interaction between the inherited traits and the environment. So it has been evolved with the interaction between the inherited traits and also the environment. It is also a result of co-evolution. So in this figure you can see this figure. 1 minute. So in this figure you can see the importance of biodiversity. It is required for fuel, fiber, food, animal, crops, tree, insects and microorganisms. So as to provide the food. So it is required for almost all the organisms on this earth. Then comes to the factor, what is the importance of biodiversity. Okay, this topic. What are the importance of biodiversity? As I have already told you that provide the internal inputs or nutrient and pest control agent on the farm. So for a farmer, biodiversity is also an important factor.
why, which provide nutrient than the pest agent on his farm only. So biodiversity is also one of the important factor from the farmer point of view, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्प कर रहा है इंटरनल इनपुट के रूप में, ठीक है, और न्यूट्रिएंट पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स के रूप में किस कहाँ पर फार्म में। तो ये किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए तो है ही हेल्पफुल, साथ ही साथ फार्मर के हम दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर हेल्पफुल होता है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इंटरनल जो इनपुट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। Next one is the crop combination adopted by the farmers. They consider the factor like space, time and labor management. So whatever the type of cropping pattern, cropping system they adopted by the farmers, they will all consider the factor like space, time and labor management, which are also important factor of biodiversity. Now then next one is then multiple cropping system follow the multiple principle of ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट। इससे पहले हमने मल्टीपल क्रॉपिंग पे वीडियो बनाया है, तो वहाँ पर हमने यही देखा था कि कम समय में अधिक मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका किस तरह से हम मतलब बहुत ही सस्टेनेबल वे में और मतलब जो रिसोर्सेज है उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मतलब समय की भी बचत हो, स्पेस की भी बचत हो और जो हमारे रिसोर्सेज है उनका भी क्षय ना हो, ठीक है। सो नाउ इन केस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम द मेनी डिफरेंट क्रॉप्स आर राइज्ड एट अ time instead of single crop using the soil, water, nutrient at a time. Okay, so many crop species which are being adopted in the multiple cropping system, like they uses the soil, plant, nutrient at a time. So that means to say that several crops, multiple crop uses the natural resources which are also being the factor of biodiversity at a time. Now then fourth one is that nutrition and food security as imperative. So because of the biodiversity we can evolve nutritious variety, क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएशन मिला तो हमने क्रॉस कराया तो हमको न्यू वेराइटीज़ मिली। ओके, एंड द कॉजेज फॉर द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एज वेल एज द फूड सिक्योरिटी ऑल्सो। ओके, नाउ then comes the factor why the biodiversity has to be conserved. What is uses and what are its uses? Why it has to be conserved? These are some questions. So answer is that to maintain the essential ecological process and life support system, it is required to maintain the ecological balance, ecological system in farm, on the cropland and also the life support system. So biodiversity is essential for ecological processes to occur in the cropland. Next is to preserve the genetic diversity. This is very important as far the agriculture is concerned and crop production is concerned, because we have to preserve the genetic diversity for the variety of character which are being used in involving the new varieties and also germplasm conservation. Now next one is to ensure the utilization of species and ecosystem in sustainable biodiversity. That has to be conserved for the purpose that we have to sustainably ensure the utilization of species and ecosystem in the environment, like for that also biodiversity has to be conserved. तो पहला तो यही है कि इकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जो वेरिएशन अवेलेबल है, एक क्रॉप के डिफरेंट स्पीसीज अवेलेबल है, जर्म प्लाज्म है, इनका कंजर्वेशन करने के लिए एंड या उनको प्रिजर्व करने के लिए फ्यूचर यूजेस के लिए, एंड इसके अलावा जो स्पीसीज हैं, जो इकोसिस्टम है, उनका सस्टेनेबल क्या करना है, हमको यूटिलाइजेशन करना है, ये भी इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो दिस आर सम मतलब आंसर जो अभी हमने क्वेश्चन हमारे सामने आए थे उनके लिए एक आंसर है कि वाई बायोडाइवर्सिटी इज कंजर्व्ड। नाउ नेक्स्ट रीज़न फॉर द बायोडाइवर्सिटी इरोजन। सो बेसिकली जो रीज़न है, नाउ द बायोडाइवर्सिटी इज़ बीइंग एरोटेड कंटिन्यूसली, व्हाट आर
all the reasons for the biodiversity erosions, like displacement of multiple cropping system by monoculture that leading to a loss of diversity in a fruit crop. हम क्या कर रहे हैं, सिंगल क्रॉप ही लगा रहे हैं साल भर, राइस 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 या वीट वीट वीट, तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोटेड हो रहा है और डाइवर्सिटी का भी क्या हो रहा है, जो इरोजन है वो हो रहा है, यानी क्षय हो रहा है. नॉट इसके अलावा है हमारे पास अर्लियर टाइम्स द फार्मर वर कल्टिवेटेड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम where variety of crops are being grown at a time and also with a diversity of factor. With the highly economical crop, the farmers are being shifted from the multiple cropping to monocropping system. So when this monocropping is being practices, there is a single factor diversity and there will be no crop diversity involved. So this is one of the factor for the erosion of the biodiversity. Now the farmers variety, they being replaced by the commercially evolved new varieties. So this is so when the farmers in the traditional farming communities, the farmers are preserving their own varieties, their own traditional varieties, but nowadays this being replaced by the commercially evolved new varieties, and it is also being considered as one of the factor for eroding of the biodiversity. So third one is the last is the pressure to bring large tract of the land under the water set in the dryland area for cultivation of hybrid varieties. So now water set जो concept है is being very much utilized for the profitable production of crop in dryland area, but in this water set also there is a lot of pressure to utilizing the high yielding varieties, and this is also being one of the factor of the erosion of the biodiversity. Now what has been to done? So the biodiversity importance we have understood, and we have also understood also why it has to be conserved, and then what has to be done for the conservation of biodiversity. So first is that identify the valuable dryland varieties of the crop, because dryland varieties जो होता है, they are the factors and dryland varieties which consist many useful character for dryland areas के लिए, which are being used for the development of other varieties. So identify the valuable dryland variety of the crops. Now then second thing is that multiply them among the farmer corporation या cooperators, not only identifying the varieties of the dryland farmer. So this variety have to be multiplied among the farmer और जो cooperatives हैं, and that means multiplication of the varieties using the farmer representative. Now third one is that characterize this variety using the farmers participatory research. So whenever a variety has been developed, it has been characterized, it has been evaluated, and in the process of evolution the farmer has been included. So that's what is called the farmer participatory research. So when we involve farmer in the farmers participatory research, so the biodiversity cultivars can be conserve. Then promote in situ conservation factor on the small farm through the encouragement of the diversified cropping system. So among the dryland conservation practices, in situ moisture conservation practices, they are very much important. So we have to follow in situ moisture conservation practices with the multiple cropping system so as to conserve the biodiversity. Last one is the combine the reintroduction of the indigenous varieties. Last one is the combine the reintroduction of indigenous variety with improved and ecologically sound soil, water and nutrient management to further improve the productivity of the local varieties. So now the indigenous variety or the local variety, they are like treasures of characters, and they are the treasure of the useful characters that can be used to breed and improve varieties. So this indigenous or the local varieties, they have been conserved in along with the following sound soil, water and nutrient management system. So in this way the biodiversity they can be
कंजर्व। सो सिंपल सी बात है, पहले तो हमको वेराइटीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि हम और अच्छे वेराइटीज़ डेवलप कर पाएँ इन वेराइटीज़ का यूज़ करके, जो ड्राईलैंड एरिया के लिए सूटेबल होंगे। सेकंड, हमको जो भी हमने वेराइटीज़ डेवलप की उनको जो हमारे फार्मर कोऑपरेटर्स हैं उनके थ्रू मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि वो सभी फार्मर्स तक मल्टीप्लाई हो पाए या फैल पाएँ। ठीक है, इसके अलावा हमको ये सारी प्रोसेस के दौरान फार्मर्स को इन्वॉल्व करना है, जिनसे कि सही वेराइटीज़ का सिलेक्शन हो पाए। इन सिटू कंजर्वेशन यानी फार्म पे ही जो कंजर्वेशन है, डिफरेंट लाइक स्मॉल जो फार्म्स रहते हैं, छोटे छोटे जो यूनिट्स रहते हैं, वहाँ पर हमको इन सिटू कंजर्वेशन करना है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को बढ़ावा देना है, जिससे कि कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस होने लगे। एंड इसके अलावा जो पुरानी वेराइटीज़ है जो अब यूज़ में नहीं करते लोग, क्योंकि हाइब्रिड यूज़ करने लगे हैं, तो हमको उन लोकल और जो इंडिजीनियस यानी स्वदेशी जो वेराइटी हैं उनको फिर से यूज़ में लाना है, उनका रीइंट्रोडक्शन करना है। तो ये पॉइंट था, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आपको बता दिया। और किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज